Hello students, welcome back to your biology class. Now we will discuss about the functions of ER, that is the common functions of both types of ER. Let's see how the ER is formed. ER that is present with close association with nuclear membrane. So this is the nuclear membrane. ये nuclear membrane है. Nuclear membrane से ही ER जो है present है इसके connection में like in the form of cisterns. So we can say that cisterns are formed from this nuclear membrane. यहाँ से cisterns form होनी शुरू हो रही है and these cisterns are interrelated with each other. cisterns एक दूसरे के साथ connection में present रहेंगी and later on ऐसे आगे की तरफ जाते हुए towards the plasma membrane when the cisterns become branched and they will convert into the next second type of element that is tubules. इस तरीके की structure form करेंगे जो कि है tubule. So they will form the tubule here and it is the plasma membrane. So this is the nuclear membrane and this is the plasma membrane. And in between the complete cell, between the nuclear membrane and plasma membrane, this ER is get filled. Here this is the nuclear membrane, this is the ER in the form of cisterns. यहाँ पे ER जो है वो cisterns की form में है and with this cisterns they will have vesicles also. यहाँ पे vesicles भी present रहेंगे. Like some vesicles will arise, most of the vesicles we can say most of the vesicles will arise from the cisterns. Cisterns से यहाँ पे vesicles arise होंगी and some vesicles will arise from tubules also. तो tubules से भी vesicles arise होंगी. These vesicles will contain the ribosomes. इनके ऊपर भी ribosomes present रहेंगे. And these cisterns will also contain ribosomes because cisterns have ribosomes. We already discussed about it. कि उनके ऊपर ribosomes present रहते हैं. Tubules do not have ribosomes. That is already clear to us. यहाँ पे कोई ribosomes की presence नहीं है. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं that ER is making the complete part. It's filling the complete part that is present between nucleus and the plasma membrane. So how what are the special functions that performed by such kind of structure? The first important function that we will discuss here is its work as a cytoskeleton in the form of this structure that from nucleus to plasma membrane it's making a skeleton of the cytoskeleton. this cell का एक skeleton बनाने का काम कर रहा है by which it provide a particular shape or it will give a framework. So we can write here it will form framework. ER work as a framework or it can provide the cytoskeleton. Cytoskeleton means the skeletal type structure or that structure which is present in the cytoplasm. Cytoplasm में present है. So it provides cytoskeletal structure to the cell. This is the first function of the ER that by this it is giving a framework to the cell. Second important function of the ER is it helps in the transportation of nuclear material. It helps in the transportation of nuclear material or that transportation from the nuclear or nuclear material कोई भी चीज जो है from the nucleus we can also write like देखिए क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर कोई भी प्रोसेस अगर न्यूक्लियस में हो रही है कोई भी मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म हुआ है इफ इट नीड टू बी सेंड आउट टू एनी पार्ट ऑफ द सेल सेल के बाहर सेल के अंदर किसी भी और ऑर्गेनल तक उसे अगर सेंड करना है न्यूक्लियस से जाएगा ईआर के अंदर and from ER it will come in the form of vesicles to the cytoplasm. cytoplasm के अंदर सेल ऑर्गेनेल से वहां तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और if it need to be go to the plasma membrane nucleus to these cisterns and through cisterns it will from tubules and from tubules it will reach to the plasma membrane तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और अगर कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस से बाहर दूसरी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना है या बाहर सेल से कुछ भी अंदर लेके आना है दैट ऑल ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ ईआर. वो सारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस में हेल्प कौन करती है दैट इज डन बाय द ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So we can say that it helps in the transportation through nucleus or by nucleus to cell organelles or through cell organelles to nucleus. इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी चाहे वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हो या न्यूक्लियस से बाहर हो या फिर बाहर से न्यूक्लियस के अंदर कुछ अंदर आना है. That is transportation is done with the help of ER. So it helps in the transportation of nuclear material from nucleus to cell organelles. So this is the important function
or cell organelles, or from cell organelles to backward also. This is the two important function. Next function is it helps in the transportation of protein and lipids. Help in the transportation of proteins and lipid. प्रोटीन और लिपिड जो भी सिंथेसाइज हो रहे हैं सेल के अंदर, उन प्रोटीन और लिपिड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है ईआर. लाइक देखिए, दिस इज द सिस्टर्निस व्हिच हैव राइबोसोम. सिस्टर्निस पे राइबोसोम से तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. दैट प्रोटीन विल कम आउट फ्रॉम दिस सिस्टर्निस इन द फॉर्म ऑफ दीज वेसिकल्स. इन वेसिकल्स के अंदर इनमें पैक होकर इन वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम द वेसिकल्स व्हिच आर फॉर्मिंग फ्रॉम द सिस्टर्निस दे विल कंटेन द प्रोटीन. उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा. And the vesicles which are formed from the tubules, they will contain the lipids. So by the formation of these vesicles like structure, these proteins and lipids which are formed from these ER is also transported to different part of the cell. तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका? प्रोटीन का और लिपिड का, जो कि यहाँ पे इन साइट्स पे फॉर्म हो रहा है, राइबोसोम्स पे फॉर्म हो रहा है, या फिर यहाँ पे इन SER पे फॉर्म हो रहा है. दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ ER. We can say that ER helps in the transportation of proteins and lipid also. Next function, important function, that is it make a compartmentalization. ER helps in the making of compartmentalization. देखिए, like this that complete space is filled with cytoplasm. यहाँ पे सारा cytoplasm है, and that inside this ER, ये ER की खुद की एक lumen है, membrane से cover structure है, और this is the lumen of ER. This is the lumen of ER. That is another compartment. This is one ER. ये ER की एक lumen है. This is another lumen of ER, and this is another. So here what happened? This inner environment, जो अंदर की तरफ का जो environment है, अंदर की तरफ की जो lumen है, that is separate from this cytoplasm. ये इस cytoplasm से separate है. So this is done due to the formation of ER और membranes of the ER. यहाँ पे ER ने जो membranous system form किया है, उसकी वजह से यहाँ पे compartments form हो गए. That it has two types of compartments. That is the intermembranous या अंदर की तरफ का जो अंदर ER के अंदर है, and that compartment which is found outside the ER. So we can say that ER helps in the formation of compartmentalization. ER helps in the formation of compartmentalization, or it makes the compartment. Next function that it helps this ER, it has a membranous system, पूरे membrane से बना हुआ है, and on the surface of these membrane they contain many type of enzymes, almost 30 types of enzymes we can say that are present on the surface of ER, and these enzymes help in the different type of biosynthetic activities of the cell, or we can say in the process of biosynthesis. Cell के अंदर जो भी activities हो रही हैं, biosynthetic activities हो रही हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम्स होते हैं, these enzymes are also present on the surface of ER. So we can say that it have or it contain enzyme for biosynthesis. Enzymes, like we can take the example some enzymes like ATPase enzyme, जो कि ATP formation से related है. ATPase enzyme हो सकता है, या फिर यहाँ पे dehydrogenase enzymes हो सकते हैं. These are the some enzyme which are present on the surface of ER. ER जो कि एक तरीके की membranous system है, and here they are making a branch structure also. तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है कि इस तरीके से बहुत लार्ज अमाउंट में एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ER, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. सो मोर नंबर अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन बी प्रेजेंट फॉर डूइंग दिस स्पेशलाइज्ड बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज. सो एग्जांपल इज ATPase or dehydrogenase. These are the some important enzymes for the biosynthetic activities which are present on the surface of ER. Next function, if we discuss here, that ER is also help in the formation of cell plate. ER help in the formation of cell plate formation that we already discussed in the our cell wall topic. जब हमने cell wall discuss किया था, वहाँ हम discuss कर चुके हैं. During the time of cell division, when cells divide, जब cell में division होता है,
when at the telophase stage what happens? Telophase जब nuclei divide हो चुकी हैं, they have two nuclei and in between these now cytoplasm start dividing. cytoplasm में cytokinesis start होगा and this cytokinesis जब start होता है, first of all a plate like structure is formed in between the cell. यहाँ पे एक plate like structure form होगी and that plate is known as cell plate. This cell plate is formed from the ER. वो cell plate form करने का काम कौन करता है? That is done by the ER. And the fragments of ER get deposited here for the formation of cell plates. And these fragments are known as phragmoplast. On fragments को बोल रहे हैं phragmoplast. And these phragmoplast deposited here and they will form the middle lamella. Middle lamella form होगी and then this middle lamella, after the formation of middle lamella, both cells have cytoplasm. The cytoplasm of the both cells secrete primary cell wall and then secondary cell wall towards the inner side of middle lamella. इस तरीके से complete cell wall formation हो जाता है by the starting of the ER from the ER, that is the cell plate. तो सबसे पहले cell plate बना और cell plate के बाद cell wall complete form हो जाएगी. So we can say that ER helps in the formation of cell plate. So these are some important functions. Besides this, we can discuss some more function, that is that they form the cytoplasmic vacuole system. They form cytoplasmic vacuole system. इसका क्या मतलब हुआ? Like देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि these cisterns, they are forming the vesicles and here tubules are also making the vesicles. If something is transported from the nucleus to the other organ, they will another organelle of the cell, then they will come in the it will be transported to the another organ by these vesicles. इसी तरीके से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो वो जाएगा यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के कनेक्शंस के साथ, क्योंकि ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. If something is transported to be Golgi apparatus, or we can say that these tubules, these cisterns, they are forming vesicles and these vesicles go towards the Golgi apparatus and then Golgi apparatus is related with the primary lysosomes. वो connection में रहेगा primary lysosomes के, और यहाँ से कोई भी चीज cytoplasm में भी अगर जानी है तो ये वहाँ यहाँ से vesicles के फॉर्म में cytoplasm में भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. So here we can see that ER is forming such a network or such a system जिसकी वजह से सभी organelles जो हैं like एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर गोल्जी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, they all are related with each other. They are in their connection. So here we can say that ER helps in the formation of cytoplasmic vacuole system, जिसकी वजह से सेल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, they remain attached or they remain in connection with each other. This is one more function. ये हुए कुछ important functions. अगर हम कुछ specialized functions के बारे में बात करते हैं, so we can discuss about one more function, that is about Nissel's granules. Nissel's granules एक structure है. Nissel's granules. These Nissel's granules are present in the cytones of the nerve fibers. ये nerve fibers के cytone पे आपने न्यूरॉन की structure देखी हुई, they have cytone जो main part होता है, उस cytone में Nissel's granules present रहती हैं and these Nissel granules are the fragments or we can say these are the mass of RER. ये RER के masses होते हैं and these Nissel's granules they helps in the ट्रांसपोर्टेशन. वहां पे इनका न्यूरॉन्स पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो वी कैन से दीस Nisel granules are the masses of RER. So here we discuss some specialized function. Besides this, one more function is here, that is that ER helps in the formation of GERL system. ER जो है वो GERL system भी बनाती है जिसकी वजह से सभी जो lysosomes, Golgi apparatus, ER, they are remain interconnected with each other for the transportation and for the all the functioning. तो जो भी प्रोटीन या लिपिड की functioning transportation है या जो formation है, they are remain in the interconnected way by forming the GERL system. So these are some important functions which are related with the ER. Here we completed the one organelle, that is ER. In the next video we will start with the next cell organelle, that is Golgi apparatus or Golgi body. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.